Testing, testing. Hello, hello. Good morning, good morning. Testing. 1 2 1 2 1 2. We can listen to. Yoso Bhagava Arahang Sama Sambuddho. To the Blessed One, the Lord who fully attained perfect enlightenment. Swakato Yena Bhagavata Dhammo. To the teaching which he expounded so well. Supatipanno yasa bhagavato sawaka sangho. And to the Blessed One's disciples who have practiced well. Tamayam bhagavantang sadamang sasangam. To these the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Ime sakare yatarahang aropite abhipujayama. We render with offerings a rightful homage. Sadhuno bante bhagava suchira parinibbhutopi.
It is well for us that the Blessed One, having attained liberation, Pachima Janata Nukamba Manasa still had compassion for later generations. Ime Sakare Dugata Panna Karabute Patiganhatu. May these simple offerings be accepted. Hamakang Digaratang Hitaya Sukhaya for our long-lasting benefit and for the happiness it gives us. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa, the Lord, the perfectly enlightened and blessed one. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. I render homage to the Buddha, the Blessed One. Sawakato Bhagavata Dhammo. The teaching will completely explained by him. Dhammang Namasami. I bow to the Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. The blessed one's disciples who have practiced well. Sanghang Namami. I bow to the Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bhavapakamana Karang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Handamayang Buddha Pitu Ting Karoma Se. Yo so tathagato arahang sama sambuddho. The Tathagata is the pure one, the perfectly enlightened one. Vijajarana Sampanno, he is impeccable in conduct and understanding. Sugato, the accomplished one. Lokavidu, the knower of the worlds. Anuttaro Bodhisattva Sadati, he trains perfectly those who wish to be trained. Sata Deva Manusanang, he is teacher of gods and humans. Buddha Bhagava, he is awake and holy. Yo imam lokam sadevakang samadakang sabrahmakang. In this world with its gods, demons, and kind spirits, sasamana brahmaning pajam sadeva manusam sayam abinya sachikatawa pavedesi. His seekers and sages, celestial and human beings, he has by deep inside revealed the truth. Yo dhammang desisi adhikalayanang maje kalayanang pariyosana kalayanang. He has pointed out the Dhamma, beautiful in the beginning, beautiful in the middle, beautiful in the end. Satam Sabayam Janam Kevala Paripunang Parisudang Brahmachariyang Pakasesi.
He has explained the spiritual life of complete purity in its essence and conventions. Tamaham Bhagavantam Abhipujayami Tamaham Bhagavantam Sirasa Namami. I chant my praise to the Blessed One. I bow my head to the Blessed One. Handamayang damapitu karoma se. Yoso sawakato bhagavata dhammo. The Dhamma is well expounded by the Blessed One. Sanditiko, apparent here and now. Akaliko, timeless. Ehipasiko, encouraging investigation. Opanayiko, leading in words. Pachatang vedita bhovinyuhi, to be experienced individually by the wise. Tamaham dhammang abhipujayami, tamaham dhammang sirasa namami. I chant my praise to this teaching. I bow my head to this truth. Handamayang sangapitu karoma se. Yoso supatipano bhagavato sawaka sangho. They are the Blessed One's disciples who have practiced well. Ujupatipano bhagavato sawaka sangho, who have practiced directly. Yaya patipano bhagavato sawaka sangho, who have practiced insightfully. Samiji patipano bhagavato sawaka sangho, those who practice with integrity. Yadidang chattari purisa yugani atta purisa pugala. That is the four pairs, the 8 kinds of noble beings. Esa bhagavato sawaka sangho. These are the Blessed One's disciples. Sahuneyo, such ones are worthy of gifts. Pahuneyo, worthy of hospitality. Dakineyo, worthy of offerings. Angelikaraniyo, worthy of respect. Anuttarang punyaketang lokasa, they give occasion for incomparable goodness to arise in the world. Tamaham sangam abhipujayami, tamaham sangam sirasa namami. I chant my praise to this sangha. I bow my head to this sangha. Okay. Page 28 from the English Pali chanting book, Sharing of Merits. Hannamayang Dhammasapapadidana Gatayo Patnamase. Punya Siddhani Kata Sanyananyani Kata Nime. Te sancha pagino hontu satanam tapamanaka. May whatever living beings, without measure, without end, partake of all the merit from the good deeds I have done. Ye piya guna wanda jamai hang mata pita dayo. Dita me jabaya dita wa anye majata verino. Those loved and full of goodness, my mother and my father dear, being seen by me and those unseen, those neutral and diverse, sata ditandi lokaziming tebuma jatu
yonika panje kachatu wokara sangsaranta bhava bhave. Beings established in the world from the three planes and four grounds of birth, with five aggregates of 104, warding on from realm to realm. Ya tang ye patidana me anamodantu te sayang, ye chimang na pajananti dewa te sang nitvedayung. Those who know my act of dedication, may they all rejoice in it. And as for those yet unaware, may the devas let them know. Maya dinanang punyanang anamodana hetuna sabe sata sata hontu awera sukajivino kema padancha papontu te sasa sejatang supa. By rejoicing in my sharing, may all beings live at ease, in freedom from hostility. May their good wishes be fulfilled, and may they all reach safety. ओके सो सबका स्वागत है इस सुबह के सत्र में। जैसा आपको पता है, यूजुअली हम लोग यहाँ से कुछ चैंटिंग और फिर शांत मेडिटेशन करते हैं। और जैसा कि वत्सा के अंत में हमने किया था कि जो यहाँ संघ है उसके जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमने शेयर किए थे। तो similarly there was the intention that perhaps for the first Kathin we can similarly hear each other's subjective experiences. तो पहले जो यहाँ से संघ के सदस्य हैं हम लोग अपनी बात रखेंगे, आप सबके साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और फिर देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कि जो जूम पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी, जो लोग या तो जिन्होंने यहाँ अटेंड किया था अगर उनमें से कुछ हैं, या जो लोग जूम पर ही कठिन देख रहे थे, इफ दे आल्सो हैव समथिंग टू शेयर, so it might be a good way for us to hear each other's experience of that event. साथ ही साथ मैं ये भी शेयर करूं कि कल आपने जो नोटिस निकला था, अनाउंसमेंट निकली थी, यू विल हैव सीन कि उसमें एक फीडबैक फॉर्म भी अब है। सो आई वुड एनकरेज पीपल टू फिल दैट। जब हम ऐसी कोई इवेंट्स करते हैं, खासकर कि इस मोनेस्ट्री के लिए ये सब बिल्कुल नया है, तो वी कैन लर्न क्वाइट अ लॉट फ्रॉम द फीडबैक, सम ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड. So again, inviting and requesting all of you to also take some time out and fill that form. So we can now start with Ajan, how would you like to do the sequencing? Ajan, गुणा करो, पहले शुरू करेंगे। अभी 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 ओके, हमारे ज्ञानवारो जी, एज यू नो, हमारे he is the new ther now of our group. तो गुणाकारो जी is inviting him to share first. और मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में I will provide a short Hindi summary at the end of each person. I'm sure both the monks to my left will have their Hindi sharing also spontaneously ready. जैसा कि आपने सुना होगा कठिन में। तो पहले मैं ज्ञानवारो जी से को इनवाइट करता हूँ, and then I'll do a little translating. Good morning, all. Yeah, just to say a few words about the experience of the Kathina. Yeah, it's just nice when there's a gathering, when everybody comes together
seeing helping hands, smiling faces. It's always brings joy to the heart when one has mudita, and so that's what I experienced really during the Katina, and yeah, that is pretty much what I can say. ज्ञानवारो जी ने लंबा सा वक्तव्य दिया हमें कि उनको ये लगता है कि जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो उससे जो एक सामूहिक भाव बनता है उसके प्रति उनके मन में काफी मुदिता जागी। तो मुख्य रूप से यही बात उन्होंने रखी। और maybe can invite Gunakaro ji to add some or something more. Yeah, so a katina like this involves many people, and so yeah, it's just wonderful to see the dedication and yeah, people actually bringing joy, like doing the activities, various roles that they was doing. So just express my appreciation for all of you that helped, and yeah, may long it continue and have growth in the Dhamma. So. और इसी तरीके से जब ऐसी कोई बड़ी इवेंट होती है तो नेचुरली बहुत सारे लोगों को साथ मिलके उसमें योगदान देना पड़ता है। कुछ न कुछ कई लोगों के अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, ड्यूटीज होती हैं। तो ज्ञानवारो जी सब लोगों ने जिन्होंने इस तरीके से योगदान दिया उनके प्रति भी अपना अनुमोदन भी व्यक्त किया, अनुमोदन भी जताया। और मेरे ख्याल से जनरली क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ के इस प्रकार की इवेंट्स काफ़ी समय से चलती आ रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, तो उनके लिए खास करके एक नया लेकिन काफ़ी संतोषजनक एक्सपीरियंस रहा। पहली बार इस परिवेश में उन्होंने ऐसा एक इवेंट देखा। Okay, so maybe we can pass it on to you. सुप्रभात सबको। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ये कठिना में बहुत अच्छा था। जो लोग उपस्थित हुए कहीं जगहों से, दूर दूर से, सिर्फ यहाँ नॉर्थ के नहीं, साउथ से लेकर भी कहीं अन्य लोग उपस्थित हुए थे। और जो उपस्थित हुए थे बहुत श्रद्धा से वो लोग इस कठिना में उपस्थित होने के लिए आए हैं। और जिस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत अच्छा रहा, जो सुबह से लेकर शाम तक रहे। और जिस तरह से हेल्प करने आए, जैसे कि जब सिलाई हो रहा था उस वक्त भी बहुत सारे लोग आए हेल्प करने के लिए। कोई धागा लगा रहा था या कोई सिलाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि थाईलैंड में भी क्या होता है कि चाहे जो भी प्रोग्राम हो सुबह होता है और उसके बाद सब वापस चले जाते हैं। जो यहाँ देखा सभी उस पूरे दिन रहे मोनेस्ट्री में और कहीं ना कहीं किसी तरीके से हेल्प कर रहे थे, या कोई सफाई करना या मेंटेन करने करने का। तो बहुत अच्छा लगा। और जो जो आए हैं उनको भी शायद अच्छा ही लगा होगा कि ये फर्स्ट टाइम था अरण्य संघ रामा में, हमारा पहला कठिन, पहला बरसाबास। तो ऐसा ही चलता रहे, जब हम मिलते हैं तो भी एक दूसरे को खुशियाँ प्रदान कर सकते हैं, या एक दूसरे के साथ मिलजुल कर
जब रहते हैं तो खुशियाँ और बढ़ जाता है। तो ऐसे ही सामूहिक आ, जब मिलन होता है आ, तो मिल के काम करना मिल के काम करना आ, और जो काम कर कर जो अपने अंदर अंदर जो आ, प्रसन्नता का भाव जगता है वो बहुत अच्छा रहता है। और कहीं आचार्य भी उपस्थित हुए थे। आचार्य संगवान लोम्फा उपस्थित हुए थे, लोम्फलियम, आचार्य केवली, आचार्य मारून, सभी ने कहा कि बहुत अच्छा रहा और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि पहली बार आचार्य सोमन का बनाया था कि पहली बार आकर इंडिया में पुराने तरीके से हाथ से सिलाई हुआ अ, अंदर वासक का। तो उनको भी बहुत खुश खुश लगा। और कहीं और आचार्य को भी बहुत अच्छा लगा कि देखकर हमारे इंडिया के वासियों का जो मिलन है और आकर जो यहाँ इस प्रोग्राम को सफलता के रूप से जो कायम किया। हाँ, तो हाँ, तो ऐसा ही बना रहे और सभी आके मिलके और आगे बढ़ाए इस शासन को यहाँ इंडिया में और अपने अपने मन में। तो आई थिंक दैट इज इट। And Anumodana for all the devotees and uh, all uh, all devotees to be participate and to contribute in various ways for the monastery and for the well-being of the monks and all the those who come to uh, stay or to be here. Sadhu. Okay, in English, very good to see the people coming from all over the India, from north, central, and even as far as from the south. People came with a lot of faith to be to participate here in our Kathina at Sangarama for the first time, and it is very good to see people gather together with very happily and being helpful to each other, like all the people are well helping and also being involved from the morning till the end in sewing or doing cleaning and all this stuff. And also uh, like in Thailand, people would go back after the in the morning session is finished. But here, people being helping out and also coming to help with the sewing. It's very good to see and very uplifting. Um, And yeah, we come together and helping out each other. It is very nice to see and very uplifting for every one of us to see and to participate in that. And yeah, and also like Achans had said, like they also quite feel very much uh, they rejoice also because of it's the first time sewing a robe like Andarvasaka robe in India for the first time with hand sewing. So they were also quite happy. Yeah, so we keep it
this way and keep helping each other out. So yeah, sadhu anumodan. So I'll just keep going and maybe just share some thoughts of mine. So to me, a couple of things stood out. I mean, for one, administratively, it seemed to have become much easier given the fact that we had already done something similar just a few months ago in February. And also, there was an advance team of volunteers that had arrived, and that was very helpful in putting things together quite well in advance, so that the last minute typical frenzy wasn't really there. And it seemed to me that I didn't really recognize nearly half the people that turned up, which for me was very positive, because it meant that there were many new people coming in. And like Gunakaroji also shared, for us it was very uplifting to see not just our usual group of supporters from the north, especially from Delhi, but people seem to have come from quite far, including many that I myself didn't know. So to me, that was one thing that really stood out. Also, then, as he mentioned, similarly, the program lasted through the day, and in the afternoon, though it was quite hot, the ability for us to share how it's been in the last few months and what the future looks like. Again, I thought unique feature, and perhaps we'll hear from some of you about how that sat. The other thing I noticed, a few of us may have noticed, I think there is this, we'll always see this little bit of a separation between our local support here, especially in Rampur Genda village and somewhat in Katgarh village, and of course the people that come from outside the region. But this time, there was a group of women who are our regular, Pindapath donors, that had actually prepared some small item with their hands for Lumpur Liam, and they approached, and they were Ajan Kevli then took them to Lumpur Liam and had them offer that. So in one way, it's a very small thing, but in one way, it's also perhaps the beginning of an opening into the people's hearts. Of course, we have daily contact, but for people to become a little bit more connected beyond a functional level, I thought was again something that was new for me. संक्षिप्त में मैंने ये कहा कि जिस तरीके से सब लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पे भारत में, जैसे गुणाकरो जी ने भी कहा, अलग अलग जगहों से लोग आए थे, और इनमें से बहुत सारे लोग नए थे। तो एक महत्वपूर्ण बात मेरे दृष्टिकोण से ये है कि जो श्रद्धालु हैं या जो सपोर्ट बेस है या जिन लोगों को दिलचस्पी है मॉनेस्ट्री में या जो हम यहाँ कर रहे हैं उसमें, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि वो डाइवर्सिटी जो है, वो विविधता वो बढ़ रही है या बढ़ी हुई है, और हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि जो सामान्य इवेंट्स होती हैं उसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप इकट्ठा होता है या उन्हीं लोगों में से लोग बदल बदल के आते हैं। तो इस बार मेरे लिए काफ़ी अपलिफ्टिंग था कि नए चेहरों को देखना, पहचानना। साथ ही साथ इस बार ऐसा भी हुआ, टिपिकली जो हमारे यहाँ पे गांव में जो लोग
हमें भोजन दान करते हैं या जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका जिस तरह का मोनेस्ट्री से आदान प्रदान रहता है, वो जो हमारा सपोर्ट ग्रुप बाहर से आता है उससे अलग रहता है। इस बार हालांकि हमने देखा कि कुछ महिलाएं थीं जो हमारी रेगुलर सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने लुम्पोलियम के लिए एक छोटा सा अपने हाथों से कुछ बनाई थी, वस्तु बनाई थी, गिफ्ट बनाया था। वो दिन आए थे और अजान केवली उनको फिर लुम्पोलियम से मिलाने ले गए थे। हालांकि एक तरीके से बहुत छोटी बात है, छोटी घटना है, लेकिन शायद इस बात का प्रतीक है कि जो हमारा लोकल सपोर्ट है, जो गांव है, उसमें भी केवल जो सामान्य एक रोज का हमारा इनसे मिलन होता है, जो वो लोग भोजन दान देते हैं, उसके आगे भी शायद कुछ भाव बढ़ रहा हो, संभव है। तो मेरे लिए ये कुछ चीजें थी, शायद अगर कुछ और बातें मन में आए तो मैं आगे फिर शेयर कर सकता हूँ। सो आई पास इट ऑन फॉर द मोमेंट, एंड इफ समथिंग एल्स कम्स अप देन स्पीक अगेन। Good morning. Similar to the previous accounts from my friends to the monastic life, I also had a very good impression and a positive experience seeing and participating in this event, which was very kind of joyful and uplifting in the atmosphere and harmonious, and just to see the people eagerly attending all the activities and very diligent in whatever they can help, and actively participating and taking interest in whatever was being done. So for me, it was a first big event to see here. I wasn't during the first event in February. So also it was nice to see the monastery suddenly covered with all kind of decorations and yeah, beautiful. Yeah. So thank you. तो अनवज्जो जी ने मुख्य तो जो जो ऑफ कोर्स एक जनरल उनका अनुमोदन था, और उन्होंने उनको भी मन में प्रसन्नता जगी। खास बात जो उन्होंने अलग कही वो ये थी कि क्योंकि वो शुरू में नहीं थे यहाँ, फरवरी में जो इनॉग्रेशन हुआ था, तो उनके लिए एक अलग ही नज़रिया था कि इतना मोनेस्ट्री में इतनी हलचल हो रही है और इतना सजावट है, इतना इतना बड़ा आयोजन हुआ है। तो उनके लिए काफ़ी एक नई बात थी, और ओवरऑल उनको भी इस इवेंट से मन में प्रमोद और प्रसन्नता उनके भी जगी, जैसे कि उन्होंने बताया, अन्य भिक्षुओं ने जैसे शेयर किया। तो संक्षिप्त में ये उनका कहना था। Shubhravat sab log. I can only repeat and re-emphasize what's already been said, that it was a privilege and a very positive experience being part of the whole Kathina event. Of course, during the event itself, but also leading up to it, it was truly a group effort that involved the time and energy and dedication of many people. And I think one point that comes to my mind listening also to what's been shared so far is just how meritorious such an event is. Thinking about all of the effort that people put into making an event like this happen, and doing it solely for the reason of celebrating
celebrating the Dhamma, celebrating the Buddha's teachings, celebrating the arising of this new monastery. It's not for anyone's personal benefit or personal gain. It's all for the Dhamma, and I think that has tremendous value. And everyone who was part of the event, even in a relatively, you could say, small way, even just attending, or on the other hand, someone who maybe was running a whole aspect, I think the magnitude doesn't matter as much as the intention to contribute and be part of such a noble effort. So I wouldn't underestimate the value of being part of something like this. And I think everyone who attended has probably that intuition and that feeling, and it's something we can come back to strengthen our own practice. We can remember, again, even if it's something small, just sweeping a path or picking up a bit of garbage or helping someone out who was doing something, or just taking part in the ceremonies. We can remember that we contributed in that way, and that can be a source of wholesome joy for us. And it just reminds me how much the whole practice is really a group effort in many ways. It's not just about our own individual experiences in meditation or our own personal feelings of progress and achievement. It's about the way the Buddha designed the Sangha. It's all about cooperation and support with the lay community, so that together we can grow and progress on the path. And I think this event was a beautiful example of that in many ways. So Anumodana and Sadhu with everyone. Just for the benefit of those of us sitting here, because we don't have a screen in front of us, we have about a little over 20 people in the online audience. Actually जो online audience है वो जो शाला की हालत है वो भी देख नहीं पा रही है. तो अभी शाला एक्चुअली अभी भी भरी हुई है. जो सारा धम्माराम का सामान आया है तो हमारे बिल्कुल सामने we are confronted not with the faces of all of you or the visitors, but with cardboard boxes basically. तिसरो जी ने दो बातें खास कही अलग. एक तो ये कि जब हम इस तरीके से इकट्ठा होते हैं तो जो सामूहिक एफर्ट है, एक दूसरे की हम मदद कर रहे हैं, इस चेतना से मदद कर रहे हैं जिस चेतना में ये भाव बिल्कुल नहीं है कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा. केवल पूर्णतः एक सेल्फलेस, बिना अपने व्यक्तिगत कोई भी अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के कुछ जब हम करते हैं, या रादर उनको ये बात खास लगी कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए मुख्य इवेंट से पहले भी और उसके दौरान, उसके बाद भी कुछ लोग रहे थे जिनकी केवल मदद की चेतना थी, बहुत ही शुद्ध चेतना थी, बिना किसी अपने खुद के लाभ के, अपने खुद के स्वार्थ के, अपने खुद के इंटरेस्ट के. तो उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि एक नई जगह पर जहाँ पे कि इस प्रकार की भूमिका नहीं है, जहाँ पे कि इस प्रकार की परंपराएं पहले रही होंगी, निकट अतीत में तो नहीं रही हैं, उसके बावजूद इतने सारे लोग इस भाव से इकट्ठा हुए जिसमें कि उनको उनके व्यक्तिगत कोई भी उनका खास कोई उसमें लाभ नहीं था. तो एक तो उन्होंने ये बात कही. दूसरी बात यही कि फिर से सामूहिक रूप से जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई भी काम करते हैं साथ में, तो धम्म का जो एक प्रमुख पिलर है, एक प्रमुख अंग है, ये भी उसी साधना का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, आदान प्रदान करना और मदद करके किसी भी कोई भी जो भी हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त कर पाना.
तो ये दो प्रमुख उन्होंने बातें कही, और फिर से उन्होंने भी एक ओवरऑल जनरल अनुमोदन उनके वक्तव्य में भी था। तो अब हम वी कैन मे बी ओपन इट अप नाउ टू आवर पार्टिसिपेंट्स। और निखिल, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑडियो लिमिटेड है, तो शायद आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और हम इनवाइट कर सकते हैं। कई लोग शायद ऑडियंस में हैं जो कि इधर आए थे, और अगर आप नहीं आए और कुछ कहना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। तो प्लीज वी कैन स्टार्ट। मे बी आई कैन जस्ट गेट द बॉल रोलिंग। अच्छा, हाँ, सूरी साहब, प्लीज गो हेड, and then others also, especially those who had come here, but anybody else as well. जी, सूरी साहब, please go ahead. मैं फिजिकली तो नहीं आ पाया, कुछ फैमिली में कंस्ट्रेंट थे, लेकिन मैंने पूरा समारोह देखा और बहुत टाइम से क्यूरियोसिटी थी, सुना तो था कि कथिना कैसा होता है, लेकिन पूरा प्रोग्राम देखा तो बड़ा अपलिफ्टिंग रहा हमारे लिए। और इनफैक्ट मैं फरवरी में आया था इनोवेशन के टाइम में वहाँ, और मुझे एप्रीहेंशन थी कि हमारी मोनेस्ट्री गाँव वालों के साथ कैसे मतलब इनका इंटरेक्शन शेप लेगा। और इस बारी जो देखा कथिना के दौरान कि गांव वाले कितने अच्छे से जल कर पाए हैं, तो दैट वाज वेरी वेरी वेलकम थिंग फॉर मी। और मैं ये चाहूँगा कि इंटरेक्शन और बढ़े, और गांव वाले भी, जैसे हमने शिविर लगाए थे लेडीज़ के लिए या कुछ और मेडिकल हेल्प देते हैं, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस है। इसके अलावा और कुछ हम कर पाए एज ए अपनी मोनेस्ट्री को हेल्प करने के लिए एविड की तरफ से, हम लोग विल बी टू हैप्पी टू डू दैट, ताकि हमारे गांव में भी साथ साथ जो है एक जो हमारा धर्म का प्रसारण हो सके। दूसरा मैंने देखा कि अभी मोनेस्ट्री में बहुत सारा काम बाकी है, डेवलपमेंट वर्क बहुत, इट्स ए वास्ट एरिया एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इज स्टिल नीडेड। और मैं ये अर्ज करूँगा अपनी मोनेस्ट्री कम्युनिटी से, और जो हमारे अपने एवीडी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, टाइम टू टाइम हमें पोस्ट करते रहें कि क्या काम चल रहा है और आगे हमारी और कैसे प्लान्स हैं, ताकि हम लोग को और एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और जो भी हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं इस काम में अपना एक योगदान दें, और जो मिनिस्ट्री की जो शेप फाइनली आप हम सब विजुलाइज करना चाहते हैं वो एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम ये पोस्ट करते रहें कि हमने क्या काम कर लिया और हमने क्या ऐड कर लिया मिनिस्ट्री में, और हमारे और क्या प्लान्स हैं, ताकि हम लोग और एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट कर सके इस धर्म के काम में। थैंक यू। Ji, Suri Saab, thank you. I'll just summarize. So, Mr. Deepak Suri has been a long-term member of the group and enthusiastic supporter. He was saying that he was very keen to come. In fact, he planned to come, but as it happens, emergent situations prevented him from being able to make his visit. He was saying that he was personally very curious to see what really a cut-in function looks like. He had never encountered such a thing before. And he basically followed the entire program over the internet. And so was very uplifted by it, and of course informed by what the function is about. He made two other points in brief. One was that there is still quite a lot to be done in terms of, so to say, developing the monastery. It's a large area, and therefore, principally, he was addressing, of course, the Sangha, but also the committee that looks after Sangharama, the Aranya Vihar Trust Committee, and exhorting them and us to keep everybody informed, both of developments, but also of prospective things that we intend to do, so that himself and others can contribute in whatever way it's possible for them. He was also very appreciative
of the, other than the dharma interaction that we have with the local village, the local villagers, of the tangible ways in which the monastery is able to help, for example, via to some extent fulfilling the health and the medical needs of people. And similarly, if there are other tangible things that the monastery can help with, then he would feel very that's an area that he was encouraging us to also consider and let people know in terms of being able to contribute towards. So that was Suri Saab's summary. Okay. Please go ahead. Maybe I can just see on the screen कि साकेत और नीता भी हमारे साथ है. Yeah, please go ahead, Saket. Namaste. Are you able to hear me, Bhante? Ji, but we can't see you, so please go ahead. Yes, sure. Yeah, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अभी रिसेंटली अमेरिका से लौटे हैं जनवरी में, एंड अमेरिका में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी 3 अलग मॉनेस्ट्री में कठिन अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जैसे अभयागिरी और धम्मधारिणी और एक और हर्मिटेज भी। और जब हम आ रहे थे अरण्या संघाराम की कच्छन में, तो मुझे याद है मैंने नीता को कहा कि देखो ये इंडिया है और मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपना लो ही रखना, हो सकता है पूरा केओस हो और कुछ भी टाइम पे ना चले और सब इधर से उधर हो। जब हम आए तो एक तो मैं ये क्या कहूंगा कि आई वाज वेरी टच्ड कि पूरी बस ऑफ कोर्स आप सबने अरेंज करी हुई थी, जो बाकी कभी भी किसी भी कच्छन में हम गए तो वहां कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं, सबको अपना देखना था, एंड दैट टू फ्रॉम दिल्ली, दैट वाज वेरी टाइम। फिर स्टे वगैरह भी एवीटी वालों ने हमारे लिए इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया। मुझे याद है अमेरिका में हम पूछते थे स्टे वगैरह पूरा फुल है, पार्किंग भी नहीं मिलेगी, आप अपना देख लीजिए कैसे करना है। बट यहाँ पर एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल। एसी बस में आप सबने हमें इतने स्मूथली आप हमें लेकर आए, एंड इवन वहां पर तो आई रिमेम्बर इन वन केस बैठने की जगह ही नहीं थी, हम जमीन पर बैठकर अपना लंच कर रहे थे। बट हियर आप सबने इतने अच्छे, मतलब आपने टेंट ऑर्गेनाइज किया, इतनी अच्छी सब सेटअप ऑर्गेनाइज करी। तो आई वुड जस्ट से दैट फैसिलिटीज में, मतलब जो भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, इन सबको देखकर मतलब इट वाज रियली, मतलब मुझे बहुत बहुत खुशी हुई ये देखकर कि सब स्मूथली चलता जा रहा था। एटलीस्ट आई नो पीछे हो सकता है चैलेंजेस हो, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स की तरह जब आए, बिल्कुल नए, किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा हमें सेटअप लगा। और फैसिलिटीज को छोड़कर अगर कठिन सेलिब्रेशन पर मैं जरा देखूं तो मुझे ये अच्छा लगा कि आपने लोंगपोलियम को थाईलैंड से बुलाया। इतने सीनियर मंक हमने अमेरिका में भी जब हम जाते थे हमें इतने सीनियर मंक के दर्शन नहीं मिले। दैट इज रियली वंडरफुल। एंड सारे मोनास्टिक से हम उनकी कई बातें सुन पाए, दैट वाज रियली अप्रिशिएटेड। एंड ऑल्सो जो भी लोग आए थे, हम जब इंडिया आए थे हमें लगा था कि पता नहीं हमें कोई धम्म दोस्त मिलेंगे या नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा पता नहीं था कि जैसे ये थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन है ये इंडिया में ज्यादा है या नहीं। लेकिन हमें इतने सारे, इतने फ्रेंडली, इतने केयरिंग लोग हमें यहाँ मिले, तो हमारा पूरा हार्ट, इट्स अ फुल हार्ट विद व्हिच वी लेफ्ट। हमारा बहुत बहुत अच्छा लगा, और आप सबने जो मेहनत करी उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल। So thank you so much for organizing this,
and inviting us, and for all the ABT people and जो भी लोग पीछे help कर रहे थे, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद इन सब. Okay, so Saket, maybe it was an omen. Maybe just as you were praising the facilities, our internet and computer here has backed up. So what I request is, I will maybe you can summarize what you said in English also, while Gunakarojo is just setting up the computer again. Okay, I think we are back. So please go ahead and summarize in English. Thank you. I'll try to summarize what I said. I may not do as good a job as Dante does. I was just sharing that we came from the US in January this year, and we had the opportunity to attend Kathinas at 3 different monasteries, or 2 monasteries, 1 hermitage in the US. And when we came to the Kathin ceremony here at Aranya Sangaram, I remember telling my wife Neeta that just keep low expectations. This is India, and things may not work out as we hope, and just expect there'll be chaos and things will be out of control, etc. But we were very pleasantly surprised that of course the AVT people had told us there will be a bus that will take us and help us with accommodation, but very nice bus, everything moving along in order, everybody very patient. The accommodation was really nice. We were brought in. Even though there were some hiccups, the bus couldn't go till the very end. There were people coming, picking us up in the cars, which I've seen in Abhayagiri also. For example, the parking lot was 1 kilometer away. And then when we came in, there was a beautiful tent. In the US, I remember sometimes there was no seat. You had to sit on the floor and eat. But here, there was enough place for everybody to sit and eat. It was a very, very well, the facilities were really well done. I'm sure there was a lot of adventures in the back, but as first-time participants, it was a very nice experience. Everything seemed to just flow along. I also wanted to appreciate, besides the facilities, the monastics who were there. They all spoke, it was really nice to come across these monastics. In the US, we never had somebody as senior as Lord Liam come by. So it was wonderful to see somebody so senior come in and for us to have an opportunity to offer to them. And besides the monastics, the people who came in and attended, we found them to be very friendly. And when we came to India in January, we thought that we don't know whether we'll really make any Dhamma friends, Kalyana Mittas. But we were so glad to meet so many friendly, caring people that when the Kathin was done, it was like we had our hearts full of happiness and Dhamma. So we're very, very grateful for this Kathin ceremony and that we had the opportunity to attend. Much gratitude. Hey, Sadhu, Saket, Neeta, thank you. Ji, Raman ji, or फिर से maybe if you can mix both languages so that we have adequate comprehension for both audiences. Yeah, I'll speak in English first and then in Hindi. Pranam to the revered Sangha, namaste to all upasaks and upasikas. This is the first time I was seeing any Kathin ceremonies. I was not there live, though I was there for the inaugural. And much though I wanted to be present, I couldn't, because next week onwards, I'm out for 5 weeks on the holy sites pilgrimage, first with the Abhayagiri monastics and then with you all. But simultaneously, being online, I have been watching the Kathina ceremonies at the other Thai forest Ajanta monasteries all over the world, which have been happening now or are going to happen.
So a week prior to the Sangarama one was the Wat Mapjan one. Last weekend was the Abhayagiri one. And the Amravati one happened yesterday, which was real. It was not relayed, but it came up yesterday online. And as we speak today, the Kathina ceremonies are happening in Wat Pa Nanachat as well as Bodhipala Monastery in Australia, as we are talking. This was very, very unique. The Kathina ceremony that was held in Aranya Sangarama. I would say unique, besides the fact that it was the first one, all the events were relayed live. All the events, I repeat. This is not easy, despite probably the most difficult Wi-Fi or internet services at any of the monasteries. The puja sessions in the sala, the desanas in the sala, as well as the shamiyana, the rice offering. The amazing thing was that even the robe sewing and the robe dyeing, short videos, live videos were relayed, which is also backed up on YouTube for all of us to see anytime. Full marks to all those who were specially coordinating this. It's not an easy task to see that we people who were online couldn't make it, saw everything as it was happening. It's amazing. On a different note, it's amazing to see the integration with the village and the villagers, including the medical services. Extraordinary. This is all in its first year. Deep gratitude. The other very unique thing is the unique coverage like that we are having online of a morning and an evening puja, not just a puja, but also followed by a 1-hour meditation session live. Honestly, this is very unique. To the best of my knowledge, this is the only Thai forest tradition, Ajahn Chah monastery, which is doing 2 sessions a day, the morning and evening puja live. Some Australian monasteries do it every day, but only the evening puja. I sincerely hope that with the internet getting better there and all the activities now having shifted to just Sangarama, hope we can have some more pujas like the Saturday puja being relayed directly from Sangarama. To be very, very honest, sitting with you monks is a completely different experience and feel. I end by expressing my deep, deep gratitude to the Sangha and all Upasaks and Upasikas for the wonderful help you put in this Kathina. Thank you. हिंदी में सारांश दे देता हूँ. भिक्षु संघ को, आदरणीय भिक्षु संघ को प्रणाम और नमस्ते उपासक उपासिका. ये पहली बार मैं कठिन सेरेमनीज देख रहा हूँ. हालांकि मैं आ नहीं पाया वहाँ, इनॉग्यूरल के लिए था, लेकिन आ नहीं पाया इस बार कठिन के लिए, क्योंकि मैं 5 हफ्ते के लिए अगले हफ्ते से पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ. पहले अभयगिरी मंक्स के साथ और फिर आप भिक्षुओं के साथ. मैं पिछले महीने में और इस महीने में देख रहा हूँ अन्य कठिन सेरेमनीज जो इस ट्रेडिशन में हैं अलग अलग जगह पे. जैसे हमारे कठिन सेरेमनी के 1 हफ्ते पहले वाट मापचान में हुआ था, पिछले हफ्ते अभयगिरी में हुआ था, अमरावती का रिले कल आया.
इस समय जैसे हम ये सत्र चल रहा है तो वाटपानाचार्य और बोधिपाल दोनों की कठिन सेरेमनीज चल रही हैं इस समय, लेकिन फिर भी ये बहुत ही यूनिक बात है, बहुत ही अलग और स्पेशल बात है कि संगरामा से जो कठिन हुआ वो पहला था, लेकिन फिर भी हर इवेंट का लाइव रिले था, जो आसान नहीं है, ये जानते हुए कि इंटरनेट कितना कठिन है वहां। हर पूजा सेशन साला में, देसना साला में भी, और शामियाना की भी देसनाएं, जो राइस ऑफरिंग था, जो रोब बनाया गया, वो उसकी स्टिचिंग और उसकी रंगाई, वो भी दिखाया गया, उसके भी वीडियोस हैं, और जो वीडियोस सेव हो गए हमारे लिए कभी भी देखने के लिए। मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने ये सारी बात कोऑर्डिनेट की, ताकि हम लोग जो नहीं आ सके उसको ऑनलाइन देख सके। एक और बात जिसे देख मैं बहुत ही खुश होता हूँ, वो है कि जो विलेज है और जो गांव है और जो गांव के लोग हैं, उनके साथ जो पहले वर्ष में इतनी सुंदर इंटीग्रेशन हो गई है, बहुत अच्छी बात है। और मेडिकल सर्विसेज भी शुरू हो गए, बहुत ही अच्छी बात। ये भारत में जो यूनिक मुझे दिखाई दे रहा है कि सुबह शाम केवल पूजा ही नहीं होती ऑनलाइन, लेकिन उसके साथ साथ 1 घंटे का ध्यान भी होता है। जहां तक मुझे पता है, और कोई भी अजानचा थाई फॉरेस्ट ट्रेडिशन की मॉनेस्ट्री ऐसे 2 बार दिन में लाइव रिले ऑनलाइन नहीं दे रही। मैं आशा करता हूं कि जैसे इंटरनेट वहां बेटर होगा, तो और ये सारी अब गतिविधियां संगराम में शिफ्ट हो गई हैं दिल्ली से, तो अब शायद मैं अपेक्षा करता हूं कि शायद जैसे आज सुबह की पूजा हुई, शनिवार छोड़ के में भी एक आधा और दिन भी संगराम से सुबह की पूजा रिले हो। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भिक्षु संघ को, आदरणीय भिक्षु संघ को, और नमस्ते उपासक उपासिकाओं को। थैंक यू। जी रमन जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने बात कही ना, दिस थिंग अबाउट ऑल द सेशंस इंक्लूडिंग things like the pindapath and the sowing, to be quite honest with you personally, मेरे में भी I also had some skepticism, but जो हमारा ग्रुप है, जो खास करके जो कम्युनिकेशंस के लोग हैं, आई थिंक दे वर क्वाइट keen के वो करें, and clearly that instinct proved right. तो आई थिंक बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर दैट फीडबैक। उससे हमें भी पता चलता है कि किस प्रकार की what is received well, है ना? So and in this manner, just to repeat कि there is a feedback form now, so those of you who can, please do fill that. उससे इस प्रकार से we are able to get a better sense of the pulse, and thereby जो future के programs हैं, hopefully they can either keep repeating what went well, or improve that which can be improved. Okay, so it's still open. अगर कोई और कुछ share करना चाहता है, then please you're welcome and can go ahead. I would like to share a couple of things. Of course, endorsing all that has been conveyed so far. What I could feel is a sense of ownership on the part of each individual that was present there. Whether they were very closely associated or daily participating in AVT activities,
morning and evenings or not. So that ownership made the whole atmosphere a charged one, which was very different from attending a kind of function like this. I would definitely emphasize that such a function, such an occasion in a monastery would be largely the responsibility of the monks. But here it was seen that there was no differentiation between the ownership of the monks and the ownership of the rest of the lay persons. I would really want to emphasize that it was really unique. Secondly, what I could feel is that the organization was so well synchronized. It did not seem there was any lacuna. Very well synchronized. With the, of course, village community, I have seen it because I have been coming up and down. There was a very close relationship with the community as well. So this is something very glaringly that I could see. One more thing which was very silent, and that I would want to mention it here. And it is not just a Kathina ceremony, but how could we reach to this state of atmosphere, this state of alignment and ownership? According to my thinking, Professor Dar has sown the seeds. And I would like to, at this occasion, I would like to share that the way Professor Dar has sown the seeds of belongingness and having a particular aim to walk on the path is something I have no words to express my appreciation and my regards for that. That is what is also, if you see, go into the depth, you can see this coming on so well that at this kind of occasion, you could see this atmosphere. I would also recognize my inability to communicate much with our friends who had come from the southern part of the country, and mainly because of the language difficulty. But I think gradually this can also be achieved. So these were the three things I wanted to share from my side. Thank you so much. मैं हिंदी में एक ट्रांसलेट करूंगी कि जो पूरा एटमॉस्फेयर था, दैट वाज, सॉरी, ये जो पूरा वातावरण था वो एक तरह से चार्ज्ड वातावरण था, और जिस वातावरण के अंदर दिखाई दे रहा था कि ये जो प्रोग्राम था, ये जो फंक्शन था कथीना का, उसमें मॉनेस्ट्री में होता है, इसीलिए मॉन्क्स की जिम्मेदारी है, हम तो वहां जा रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं था। उनको भी लगता था, सारे ले पर्सन्स के लिए भी, कि ये हमारा है, हम यहाँ बिलोंग करते हैं, यानी सिर्फ जो हमारे साधु संघ है उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी इतनी ही है। तो वो बहुत ग्लेरिंगली, बहुत साफ साफ दिख रहा था। दूसरा जो मैंने देखा था, क्योंकि आई हैव बीन विजिटिंग क्वाइट ऑफन, कि लेक कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन है, और वो उभर के यहाँ पे भी आया। जो few times that I have been there, I have seen on Sundays the activities that keep on happening, very, जहाँ पे, सॉरी बीच में इंग्लिश बोला जा रहा है, जहाँ पे बनते टीचरों बच्चों को बुला के जिस तरह से इनके साथ एक्टिविटीज करते थे, जिसमें बच्चे नहीं बड़े भी आते थे। इट वॉज मेनली फॉर बच्चे के लिए ज्यादा था, मगर सारे बड़े भी आते थे। तो ये बहुत अच्छा समन्वय हुआ है कम्युनिटी के साथ। तो यहाँ तीन हुआ कि मोनेस्टिक्स है, जो बाहर से आने वाले लोग हमारे जैसे हैं,
वो एक ग्रुप, और तीसरा था हमारे गांव के लोग। तो ये तीनों का बहुत अच्छा समन्वय दिखाई दे रहा था। और ये सबका प्रोग्राम था, सिर्फ मॉन्क्स का नहीं था। वो तरह की एक ओनरशिप बहुत साफ दिखाई दे रही थी। आई थिंक मेनली दिस वर द 2-3 थिंग्स। यस, प्रोफेसर धर ने ये बीज बोए हैं। ये बीज इस ईबीटी जब शुरू हुआ वहीं से बोए हुए, और वहां से ये आप देखोगे तो अगर आप इस ईबीटी के साथ पहले से जुड़े हुए होते हैं तो इनको महसूस होता है कि ये चीज सब हमारी है, हम इसके साथ है। और ये जो भगवान बुद्ध का पाथ है, रास्ता है, उस पे किस तरह से चला जा सकता है, ये सारे बीज दर साहब ने बोए हैं। और दर साहब अभी भी इसको नर्चर कर रहे हैं विदाउट एनी पोजीशन। उनके लिए कोई पोजीशन नहीं होती है। और ये हमने बहुत देखा, खास करके 1 महीने की जो रिट्रीट थी। ऑफ कोर्स आई एम ब्रिंगिंग अनदर फैक्टर, मगर ये जो रिट्रीट थी, हमने जो देखा है, इतना कमिटेड इंसान जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, मगर इन्होंने हमारे से ज्यादा कमिटमेंट दिखा के हमें सिखाया है। तो ये सारी चीजें जो है, जो वाइब्स है, वो आपको मिलता है। एंड मुझे लगता है कि आई वुड लाइक टू गिव काफी इसका इसका क्रेडिट जो है मैं दर साहब को जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, so there was reference to our guests from participants from South, and if there's somebody, if Dr. Divya Sajjan is there, then maybe she can share something, or if anybody else would like to, please go ahead. Vandami Bhantiji. Divya, if you're saying something, you'll have to be louder. Okay, Bhantiji. Please ignore my soreness. निखिल, आपको आ रही है क्या? हमें तो नहीं आ रही यहाँ पर। Vandami Bhantiji. Is my voice audible now? दिव्या, it's in and out. निखिल, आप कर सकते हो कुछ? Vivek, can you bring your speaker closer to you, and I'll let you know if it is clear to us. Please give me a moment. Yeah, okay. Okay. She is arranging something. Vandami Bhantiji. Is it now audible? If you are better than earlier, if you can little bit louder, it will be even. All right. I will try my best. Is it This is fine good. now? Yeah, wonderful. Okay. So, Vandami Bhantiji and Metta to all the participants. I'm sorry to cause this discrepancy because of the cold weather over here. I would express my deepest gratitude to the Aranya Sangha Rama and to the whole trust members over there. I don't think I would ever be able to express in words my gratitude and the sort of chance we all get to make merits. And I'm deeply touched by the warmth and the hostility that has been shown to us, because I was not, I came to know about this program just a week before through some of the websites. And then I was over rejoiced by the fact that Longpo Ling will be there. And then
somehow with other devotees, we attended it. And I must say, we have been coordinated throughout the whole event with the help of Geeta and this Poonam. Like they have been really, really guiding us, and the Chula Kathina thing, which like I think I have never ever seen that. That was the first, uh, to witness something like that, and also to give the Pindapata and and to get the Dhamma talks from Longpo. That was really the highlights of the event for me and all the other devotees which were with me. Uh, Only thing I would like to say is like if there would be a Dhamma Q&A, like question and answer sessions, that would really be helpful for all the participants and other devotees who are constantly seeking guide from the from the monks. So if there is add up of that Dhamma Q&A, that would be really great for us. And also I would like to express my again gratitude to the Sangha of the Aranya Sangha Rama. I like because of the monk, he has given me the opportunity to me and the other participants to see the Pindapata, which was going in the village, and we were able to, and that somehow also helped me to reflect the idea of, uh, like how to be non-biased and also reflecting the Dhatunga practices, which I have always seen in the or always read in the text, but never witnessed it. So really grateful for the Sangha over there, and also to the other monk who has been very kind and who has given us the Dhamma talk and also the chance to meet Longpalim again. So the whole of this process was really good, and we are grateful again. And to be honest, we were not, like when we were leaving the Sangarama, we were really half-hearted because there's something in that vihara or uh, over there, like the welcomeness, the warmness, and the belongingness, like to be there. And I like me and the other fellow devotees, we were really discussing about how everything's fall into the place before even planning it. Like we wished to uh, be there somehow, and things all got aligned. And also my deepest gratitude to a devotee named Deepak. I don't know whether what was his full name, but as he was coming to the Sangha Rama again on the 13th, maybe, so we were really helpful too because he has helped us from coming to that. And also another thing I would really like to add up is if there was any uh, like the residing areas, if they was really near to the Sagarama, because uh, many because we had early morning flights, and then again we had to be at the vihara in the morning hours, like basically for 7:30 on 8 something. So that was the only thing. But besides that, everything was really well planned, and we are looking forward for many such events where we get the chance to do more merits and to learn from the Sangha. I express my deepest gratitude. Thank you. Okay, Sadhu. Divya, thank you. And what I'll request is if you'll please click that link that was sent out last evening and maybe, put these things in. Of course, as you speak, we are also recording them, but it'll be quite helpful. तो डॉक्टर दिव्या कर्नाटक से 3 और लोगों के साथ आई थी, अलग अलग ज़िलों से। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो इस तरीके से और भी जगहों से बहुत सारे लोग आए थे, और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इस इवेंट में हम कई ऐसे लोगों से मिले जिनसे हम पहले नहीं मिले थे, एंड आई एम श्योर वाइस वर्सा। ओके, सो अगर किसी और को संक्षिप्त में कुछ कहना है, प्लीज यू वेलकम, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, सो आई विल इनवाइट गुणाकरो जी टू परहैप्स जस्ट समराइज इन क्लोजिंग, और उससे पहले very briefly somebody would like to still say something, then there is an opportunity.
Otherwise, I'll pass it on to Ajay Gunakaro. Okay, Sadhu, thank you for sharing the feedbacks, and yeah, sure, we will look to it. So maybe we can do the closing homage now. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantang Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami. हम सभी शिव संघ को 3 बार प्रणाम करेंगे. Let's offer our 3 pranams to Venerable Bhikkhu Sangha. प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय प्रणाम. Thank you, Bhante. Thank you very much. Thank you.